Hello everyone, welcome to our channel Scholars World. In this video, we'll be focusing on important questions of NCERT for class 12 students. As boards are ahead, it is very important that as a revision, we must solve all the important questions of NCERT. So, after seeing all these important questions, I assure you that you will be able to score more than 90% marks in board exams. So let's now see over here what are the important questions. We'll be focusing on chapter 6 to chapter 13 in this video, while for chapter 1 to chapter 5 kindly refer the previous video which is recorded for part 1. Important क्वेश्चंस का रिवीजन यदि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करके जाइए. तो हम पहले चैप्टर 6 देखते हैं कि चैप्टर 6 में किस टाइप का क्वेश्चन आता है. चैप्टर 6 में ऐसे के 2 क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं, रेट, अप्रोक्सीमेशंस या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. LA1 का एक क्वेश्चन आता है जो टेंजेंट नॉर्मल से श्योर है, और दूसरा क्वेश्चन होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से. और LA2 का एक क्वेश्चन आता है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में. ये फिक्स्ड पैटर्न है चैप्टर 6 का. और चैप्टर 6 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर NCERT. आई विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NCERT. So we'll be starting with chapter 6. The very first important example is example 2, then example 3, example 4. Come to exercise 6.1. Question number 3, question number 5, question number 7, question number 8, question number 10, 14, 15. These are the important questions of rate of change of quantities, then increasing decreasing function. Important is example 9, example 10, example 11, example 12, example 13. Then come to exercise 6.2, question number 6. Sixth ka important parts are C and E. Then question number 7, question number 9, question number 14, question number 17. Then example 16, example 17, example 18, example 19. Then come to exercise 6.3, question number 7, question number 8, then question number 11, 12, 15, 17, then question number 21, 23. Then we'll be doing approximation. Example 23. Come to exercise 6.4. In 6.4, important questions are first ka part 12, then 14, part 14, question number 7, question number 8. And come to maximum minima. Important examples are example 29, then example 32, example 35, example 37, example 38, example 40, example 41. Then start with exercise 6.5. First question part 3, second ka part 2, part 4, third ka part 5, sixth question number 7, question number 10th. Then here question number 11, question number 17, 18, 23, 24, 25, 26. Miscellaneous example. Example 43, example 44, example 45, example 46, example 47, example 50, miscellaneous exercise. Question number 2, question number 3, question number 5,
question number 9, question number 11, 15, 17, 18. This is all about application of derivatives. Now we'll be going with our next chapter, integration. So integration से first we'll see किस type के questions आते हैं. So let's focus over here. Example, chapter 7. There are two possible options. Option 1 says that will get one question on VSA from indefinite integral. Then ऐसे वन का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्कर, इंडेफिनेट का ही. LA1 के दो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन होगा इंडेफिनेट या डेफिनेट में से और ऑप्शन के साथ, या लिमिट ऑफ सम और इंडेफिनेट चॉइस के साथ, और एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल पे. दूसरा पॉसिबल ऑप्शन है कि VSA ना आए, ऐसे का एक क्वेश्चन आए, वो इंडेफिनेट इंटीग्रल पे ही होगा. LA1 का एक क्वेश्चन आए, मतलब एक 4 मार्कर क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास चॉइस होगी लिमिट ऑफ ए सम एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल का, और एक LA2 का क्वेश्चन आए, LA2 का क्वेश्चन आपको डेफिनेट इंटीग्रल का आएगा. तो हम देखते हैं कि अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से इंटीग्रेशंस के. तो ऑल ऑफ यू टेक योर पार्ट 2 एंड ओपन चैप्टर इंटीग्रेशन. Example 3, page number 296. Then start with exercise 7.1, question 19, question 20. Then example 6, all three parts are important. Come to exercise 7.2. Important questions are 22, 24, 25, 33, 35, 36. Then come to example 7. Exercise 7.3, question number 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22. Come to example 8, second part. Example 9, second part and third part. Example 10, first part and second part. Exercise 7.4, fifth, sixth. Question 12th, 15th, 19th, 23. Then we'll go with integral by parts. Example 14, example 15. Come to exercise 7.5. Important questions are 6th, 13th, 16th, 18th, 19th, 21. Example 22, 7.6, 10th, 13th, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Then example 24. From exercise 7.7, 8th question is important. Only one is important question. The limit as a sum. Example 25. Exercise 7.8, 6th question. Then example 27. All 4 parts are important. Then come to exercise 7.9. In this important questions are question number 14. There is only one important question. Exercise 7.10. Important questions are 3rd, 5th, 8th and 7th as well. Properties of definite integral. Example 30. Important questions are example 30. Then example 35. Then example 36. Exercise 7.11. Important questions are 10th, 8th, 10th, 12th, 15th, 16th and 18th. Come to exercise. Example 37, 39, example 40, 41, 42, 43, 44. Come to exercise, miscellaneous exercise. Important questions are 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18,
Then from 20 to 24, 20, 21, 22, 23, 24. Let's start with the next chapter, AOI, application of integral. So application of integral से सिर्फ एक ही possible question है, LA2, एक 6 marker question आएगा, that will be area between the curves. So let's start with the important questions of AOI. Example 3, then example 4, example 5, exercise 8.1. Important questions are 6th, 9th, then example 7, example 8, example 10, then important questions from exercise 8.2, 3rd, 4th, then miscellaneous example, example 12, example 11, example 12, then this example 13, 14, example 14. Come to miscellaneous exercise. Important questions are 4th, 10th, 11th, and question 15. Then we'll see next chapter, differential equation, chapter 9. तो चैप्टर 9 में दो पॉसिबल ऑप्शंस है. एक ऑप्शन में आपको ऐसे का एक क्वेश्चन देगा जो होगा क्वेश्चंस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, या वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे. और एक LA1 का क्वेश्चन आएगा विच इज सर्टेनली ऑन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. दूसरा ऑप्शन पॉसिबल है कि LA1 का एक क्वेश्चन देगा आपको एंड LA2 का एक क्वेश्चन आएगा आपको. तो हम देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मस्ट आपको करने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कम टू एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 पार्ट 3, देन एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Then come to exercise 9.2. Important questions are 6th, 7th, 9th. Then example 7. Then exercise 9.3. 4th, 5th, 10th. Then example 10. Example 11. Then example 14. Exercise 9.4. Important questions are 4th, 9th, 13th, 15th, 17th, 19th, 20, 22. Then from homogeneous differential equations, important questions are example 16, example 17. Then come to exercise 9.5. Important questions are 7th, 10th, 13th, 15th. Then come to linear differential equation. Important questions are example 22, example 23. Come to exercise 9.6. Question number 8. Question numbers 14, 16, 17. Come to miscellaneous examples. Example 25 is important. Then example 27, 28. Example 28. Miscellaneous exercise. First का part 3. Then second का part 2. Then question number 6, 7. Question number 9, 10, 11, 12, 14, 15. Now we'll be doing questions on vector algebra. So important questions we'll be doing on vector algebra. But before that, let's study the exam pattern. Example, chapter 10, there are two possible options. One option is, in a paper you'll get BSA का one question, ऐसे का एक क्वेश्चन जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पे डिपेंड होगा, और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का क्वेश्चन हो सकता है. LA1 का एक क्वेश्चन वो किस आर्टिकल से आएगा, प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे आपको वेक्टर्स पे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी आ सकता है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको BSA और ऐसे का क्वेश्चन ना दे, सिर्फ LA1 का एक क्वेश्चन दे, आर्टिकल सेम होंगे, प्रूविंग का क्वेश्चन हो सकता है या एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन हो सकता है. तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस कौन से हैं. सो एग्जाम्पल 10, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 8, देन एग्जाम्पल 12, एक्सरसाइज 10.2 10th क्वेश्चन, 13th, 14th, then example 16th, example 17th, example 20,
In fact, example 19 also. Exercise 10.3 fifth question. Exercise 10.3 fifth question, 9th question, 11th, 13th, 17th. Then from cross product, example 24 from exercise 10.4 fifth question. Then example 26, example 27, example 28, 29, 30. Miscellaneous exercise, question number 3, question 9, 11, 12, 14. Then we'll be doing questions on 3D, 3-dimensional geometry. That is chapter 11. चैप्टर 11 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे विल सी. एक ऑप्शन पॉसिबल है कि वीएसए का एक क्वेश्चन आए आपको, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स पे डिपेंड करेगा या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पे डिपेंड करेगा. और दूसरा है LA1 का एक क्वेश्चन हो जो लाइंस और कोप्लानरिटी पे डिपेंड करेगा. और LA2 का एक क्वेश्चन हो जो ऑन प्लेन्स प्लस लाइन पे कंबाइन क्वेश्चन होगा. इस पे जो क्वेश्चंस हैं दे आर हाईली कॉन्सेप्ट बेसिस. और ऑप्शन 2 पॉसिबल है कि LA1 का एक क्वेश्चन दे आपको और LA2 का एक क्वेश्चन दे. तो हम देखते हैं कि 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर नंबर 11 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री. देन important examples are page number 466, example 3, example 5 from exercise 11.1. as such there is no important question. Then you come on, then important example is example 9, example 11 from exercise 11.2. important questions are third, and question number 10, 11, 12, 13, 14 and 16. These are the important examples. Then we'll be moving to planes. Example 14, example 16, example 20, example 25. Now let's start with exercise 11.3. first का D part, third का C part, then fifth का B part, sixth का B part, then question number 8th, 9th, 11th. Then miscellaneous examples, example 26, 27, 28. Then example 30. Then miscellaneous exercise, question number 4, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 21. Then we'll be doing questions on linear programming. जैसे एक LA2 का क्वेश्चन आता है, तो let's start. 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. तो important examples are example 2, example 3, example 4. Then exercise 12.1, question 6, question 8, example 6, example 7, example 8. Exercise 12.2. important questions are question number 2, 4. Then question number 9. Then example number 9. Example 9, page number 521. Then example 10. Example 11, transportation का question. Then come to miscellaneous exercise 12. important questions are 3, 6, 8, 10th. Then we'll be starting next and last chapter of this book. It is probability. probability की हाई वेटेज है. probability में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. probability में ऐसे का एक क्वेश्चन आएगा that will be dependent on conditional probability. और LA1 के आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे. LA1 के 2 क्वेश्चंस एक बेस थ्योरम पे श्योर है और दूसरा क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल और बेर्नौली ट्रायल पे भी हो सकता है. चॉइस भी हो सकती है. चॉइस इज पॉसिबल इन दिस चैप्टर. सो लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं पहले हम वो देखेंगे. दैट इज कम टू एग्जांपल 3, पेज नंबर 535. एग्जांपल 3, इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एग्जांपल 4, देन एग्जांपल 7, then come to exercise 13.1. question number 7th, question 12th, 13th, 15th. then example 9,
Then example 11, example 12, example 13. Exercise 13.2, fifth question. 10th, 11th, 13th, 14th, 16th. Then example 16, example 18, example 20, example 21, exercise 13.3, question number 3, 4, 10, 12, example 24, 25, example 26, example 27, example 28, example 29, exercise 13.4, 5th, 6th, 8th, 11th, 12th, 14, 15. Then come to example 30. Important question. Example 31, 32 as well. Then exercise 13.5. Important questions are 3rd, 6th, 8th, 10th. Come to miscellaneous example. Example 34. Example 35, 36. Miscellaneous exercise. Question number 3, 4, 6, 7th, 9th, 10th, 12th, 13th, 15th. This is all about this chapter. So with this, I request you all that from both the books, part 1 and part 2, you must solve at least all the important questions twice. Once you have completed in your preparation, leave the whole NCERT. Start doing these important questions time and again. With this, you'll get the confidence, and paper will be based on all the concept of important questions. I wish you all, on behalf of Scholars World, all the best for the board exams. Thank you.